का सफर आसान नहीं होता। जिंदगी का सफर आसान नहीं होता। हर कदम पर एक नया इम्तिहान है होता। हार न मानो, चलते रहो हर मुश्किल राह पर। हार न मानो, चलते रहो हर मुश्किल राह पर, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा मेहरबान है होता। Hello and welcome back, friends, to another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Friends, this is a series whereby we are moving from restricted mindset to growth mindset, whereby we are moving from financial accumulation to financial stability. In the process, we are trying to understand the terms and terminology to accumulate and stabilize the finance. That is what we are up to. So as we are securing our future financially. So today's topic is, friends, understanding credit and debit in the context of money market. That is what is necessary. What is credit and what are debits? So we'll break down the foundational concept of credit and debit in terms we often hear. That is what we are hearing. एक credit किया मैंने, ये debit आ गया. Yeah, we get a message on WhatsApp. Sorry, on SMSs from the bank that your account has been credited, your account has been debited. What exactly is that credit and debit? That is what we are trying to understand. So mastering these two is crucial for effective money management and financial growth. Naturally, अगर मुझे ये समझ में आ गया, आम तौर पे मैं समझता हूं कि क्रेडिट क्या है और मुझे डेबिट क्या है, क्योंकि मेरे अकाउंट में जो गया दैट इज डेबिटेड और जो आ गया पैसा तो दैट इज क्रेडिटेड. ये एक सिंपल भाषा में एक लाइन में उसका डेफिनेशन हो सकता है. बट हाउ डू दे वर्क? So what is their role in your personal finance? So when you withdraw cash, make a purchase or pay bills, these are all debit transactions. आपने पैसा दिया, अपने अकाउंट में से गया. So that is what is, all these are debit transactions in the personal finance basis. So what is debit? In simple terms, debit represents money leaving your account. It reduces your available balance. That is what debit is. आपके अकाउंट से बाहर जा रहा है, आपके अकाउंट को हिट हुआ और पैसा डेबिट गिरा, ईएमआई की तरफ चला गया, आपने कुछ खरीदी किया उसकी तरफ चला गया. So any amount that is getting out from your account is debit transaction. So if you are paying for groceries, now that is also a debit transaction. Yes, of course. So then what is a credit? A credit represents money coming into your account. It increases your available balance. When you deposit funds, receive interest, earn some interest, your account is getting credited. That is, the available balance is increased. That is what credit is all about. So the role of credit and debit in money market. Money market is a short-term borrowing and lending ऑफर. मतलब मनी मार्केट मतलब क्या है कि अगर मुझे पैसा अभी चाहिए तो मैंने किसी से लोन लिया और मैंने पैसा लिया. So my account is getting credited, but is the credit? No, but that is the loan. That is what you have to understand. There are many options available. Even when you are buying on online, you get an option to pay by EMI. What is that? It is a loan. You're not paying the whole amount. So that is not at all the amount that is getting credited to your account as against the loan is your loan amount. So शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए फाइनेंशियल नीड्स जो होती है वो नीड्स हम लोग क्रेडिट डेबिट के हिसाब से अगर देखें तो दीज आर व्हाट क्रेडिट एंड डेबिट्स आर फॉर. It plays a key role in helping businesses and governments manage the short-term financial needs. Both credit and debit transactions are essential in money market as they influence liquidity, investment and financial strategies. अगर मुझे आज अभी टीवी खरीदना है तो मैं चला गया दुकान में, दुकान वाला ऑफर देता है. We are having an option that you can buy it on EMI. What is that? Don't pay the whole amount now. Pay in parts. But what is that pay in part? That is a loan. So account is getting debited. So don't mix up
the loan amount getting credited to your account means you are getting the credit. No, it is the loan part. So your account is now, you are having the burden of that loan that is to be repaid. You have accepted it with an EMI, equated monthly installments. That is what it means. So debit in the money market means from your account, the money market, you are purchasing something. You are you may say the loan which you have taken for purchasing of a TV is also a debit to the account. क्योंकि वो आपका जाने वाला पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है, आपको देना पड़ेगा ना वापस. अगर देना है तो वो इट इज अ बर्डन ऑन योर अकाउंट. So when you say that you are having the money in the form of loan, it means that you have accepted to repay the amount in EMIs, equated monthly installment, with an interest. So burden is more. So the debit is more. So don't mix up the loan as a credit part of your transaction. आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है. अभी हमने क्रेडिट और डेबिट के डेफिनेशंस देखे. पैसा आएगा, बट वो पैसा लोन की तरफ से आ रहा है, मतलब वो बर्डन लेके आ रहा है, बिकॉज यू हैव टू रीपे दैट विथ मोर इंटरेस्ट. सो आपके अकाउंट में से वो जाने वाला है. So whenever you want to purchase something, there are two options: either directly debit to your account and pay the whole amount, or pay it in EMI. Pay it in EMI मतलब you get the loan amount and then you repay the amount. सब भरते हो क्या? नहीं, धीरे धीरे भरना है, क्योंकि अभी मुझे सब नहीं भरना है. Okay, but still then whatever you have purchased is not yours. So the credit to your account is not the amount towards the enhancement of your amount or towards the enhancement of your available balance. No. It is only a part of debt which is getting credited because you have accepted it to repay it on EMI. Hence, I always say, you see, don't borrow the things when you can pay for the things. मतलब मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक छोटा टीवी है लेकिन बाजू वाले ने बड़ा ले लिया, अब मुझे लगने लगा मेरे पास भी बड़ा टीवी होना चाहिए, तो मैं दुकान के पास चल गया. वो बोला ठीक है EMI पे लेके चले जाओ. मैं भी खुश हो गया, एक टीवी तुरंत में बड़ा सा घर पे लेके आ गया. ट्रांजैक्शन ओवर. हैप्पीनेस एट द कॉस्ट ऑफ डेट. ओह, सो माय अकाउंट विल बी ऑलवेज इन डेबिट. अरे जो पैसा है वो किसका है? वो देना है ना दुकानदार को. टीवी जो लाया बड़ा, डेबिट, डेट्स. So when you say that you are into the debt, it means that you are ready to pay the amount from your income. अरे बाप रे, तो बजट प्रिपेयर नहीं किया था, यही तो प्रॉब्लम आ गया. वी आर नॉट प्लान फॉर द बिग टीवी. इंपल्सिव खरीदी कर दी मैंने, मुझे लगा अभी चाहिए ही चाहिए. अभी मैं नौकरी पे लग गया हूं तो मुझे आज के दिन में मुझे टीवी चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए, सब चाहिए. और मैं EMI क्रेडिट कार्ड पे लेता चला गया. व्हाट इज दैट? नाउ सिंस द अमाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड अगेंस्ट द लोन दैट यू आर क्रिएटिंग, मतलब अगर फाइनेंस वाले से आपने लोन लिया है टू परचेस समथिंग, the amount is a burden to your account. It is not at all enhancing your paying capacity. So better way, wait, budget it out, plan it out and then purchase, because for everything you are paying interest. कितना इंटरेस्ट दे रहे हो तो अभी देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं. क्यों नहीं देखा? पैसा किसका? तुम्हारा. किसने सोचना चाहिए? तुमने. तो अगर ये सोचा नहीं है तो सोचो कि एक अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए आई हैव चेंज माय वांट्स इनटू माय नीड्स. घर में मेरे टीवी था छोटा, लेकिन मुझे लगा नहीं मुझे बड़ा टीवी चाहिए क्योंकि बाजू वाले ने लिया. ओहो, और मैं EMI पे टीवी लेके आ गया. व्हाट हैव आई डन? I have put to my stake every credit to my account and converted it to the debts. Correct? अब जब तक वो टीवी का सारे EMI पूरे नहीं हो जाते, वो टीवी मेरा है ही नहीं. टेक्निकली घर में तो टीवी है, लेकिन EMI दे रहा हूं दुकानदार को या जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको. So till the whole amount is getting repaid,
The TV, I'm not the owner of the TV. That is what you have to understand. Impulsive खरीदी करने की जरूरत नहीं है. Plan out करो. Because you're paying more. You're creating debt on your credit. तुम्हारे रिपेमेंट कैपेसिटी पे ही तुम लोन खड़े कर रहे हो. तो ये विशियस सर्कल खत्म कब होगा? नहीं होता है फ्रेंड्स. बिकॉज हमें आदत हो गई है कि हमारे वांट्स को नीड में कन्वर्ट करने की, और हम अपने मन को तसल्ली देते हैं. हाँ नहीं नहीं, ये बराबर है, मुझे अभी जीना है तो इनके साथ ही जीना है, तो आजू बाजू वालों ने ऐसा बड़ा टीवी लिया तो मुझे भी बड़ा टीवी लेना पड़ा. ये कौन सा लॉजिकल रीजनिंग हो गया? बट वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाँ लॉजिकल है. व्हाई? बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग that we can buy a thing on debts, but that is not affecting my credit. No, it is affecting your credit. It is affecting your purchasing power. It is affecting your available balance. That is what you have to understand from the credit and debit. The debt part that is you are creating is a debit to your account. Don't create unnecessarily debits. If it is not required, it is not required. Let us call spade a spade. नहीं इसकी जरूरत नहीं है. जिस दिन मुझे वो जरूरत बनेगी मेरी, वो मेरी नीड बन जाएगी, आई विल एक्सपेंसेस. लेकिन जब तक नीड नहीं है तो व्हाई आई एम अननेसेसरीली कन्वर्टिंग माय वांट्स इनटू नीड्स? वांट्स है तो मैं करूंगा ना. जब मेरे पास पूरा पैसा आएगा तो आई विल एंजॉय द लाइफ. इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट एंजॉयिंग राइट नाउ. The only thing is that I'm planning out my life because I want to secure my future financially. That is what we are up to. So credit debit simple terms में था तो हमने देखा कि अकाउंट में जो भी आया तो मेरा बैलेंस बढ़ गया तो मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई. That is what credit is. और डेबिट में हमने देखा कि अगर पैसा चला गया तो मेरी परचेसिंग पावर कम हो गई. सो मेरे अकाउंट का अवेलेबल बैलेंस कम हो गया. लेकिन जब मैं लोन लेता हूं और मेरे अकाउंट में बैलेंस आ जाता है तो व्हाट इज दैट बैलेंस? दैट बैलेंस इज नॉट एट ऑल अ क्रेडिट. ये तो अभी बर्डन आ गया, कुछ इंटरेस्ट देके मैंने खरीद लिया वो बर्डन. अब जब तक वो बर्डन खत्म नहीं हो जाता मेरी परचेसिंग पावर उतनी ही रहने वाली है. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. जब तक कि मेरे पास एकदम अचानक लॉटरी लग गया, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया. सो फाइनेंस अगर डेट से आता है तो दैट इज अ लायबिलिटी फॉर यू. You are creating a burden for yourself, for your saving balances, for your future. सिक्योर फ्यूचर करने के बजाय आप लोन का फ्यूचर बना रहे हो, ईएमआई पे जी रहे हो, है ना. सो वेन एवर यू हैव डिसाइडेड समथिंग, प्लीज रिफर टू योर पर्सनल जर्नल जहां हमने लिखा है, बजटिंग किया हुआ है, मंथली बजट लिखा है. Whether it is in this month's budget, whether it is required. If it is required, yes, you have to adjust the other things. But if it is not required, do not buy it. Because creation of debt is affecting your purchasing power and hence available balance with you. So friends, what you have to manage is understand what credit and debits are. Credit card purchases, it is not a credit. It is a loan that you have to repay. So you are purchasing a burden for yourself. क्रेडिट कार्ड पे मैंने खरीदी कर ली. अब एक्सपेंसेस कितना है तो इंटरेस्ट उसका जो देना पड़ेगा वो तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज. नाउ दैट पार्ट is not necessary. मेरी वो नेसेसिटी नहीं हो सकती है unless and until इमरजेंसी आ गई तो मैंने ऐसा खरीदी कर लिया तो ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड. इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया आदमी तो मुझे क्रेडिट कार्ड से बिल पे करना पड़ेगा. इट्स ओके. दैट वाज द नीड ऑफ द आवर. सो ऐसे एक्सेप्शन छोड़ने चाहिए. बट unnecessary payment on credit cards or taking loans for your lavish living or for your conversion of wants into needs, I would say please avoid, because that is going to affect your purchasing power, your available balance with you at your savings. And our goal is to increase the savings part, increase the investment part, because we want to secure our future financially. That is what we started with.
because we want to change the mindset from restricted mindset to growth mindset. So don't be happy or happy spree on the purchasing anything on the credit card, because you are affecting your purchasing power. You are not increasing your purchasing power. देखते हैं ना हम कई बार जब कहीं जाते हैं तो किसी के दूसरे पॉकेट में से ऐसा आदमी निकालता है और उसके पॉकेट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड दिखाई देते हैं कि कई बैंकों के, कई ऑर्गेनाइजेशंस के, होता है ना, एंड वी आर लाइक हाँ इतने क्रेडिट कार्ड है. That particular person is not at all enhancing his purchasing power. Rather, I would say that he is restricting his purchasing power, because whatever he is purchasing on the credit card, it has to be repaid. Hence, his purchasing power is getting affected. Hence, his balance is getting affected. Hence, his budgeting going into doldrums. अब क्रेडिट कार्ड पे सब कुछ खरीदी करते चले जाओगे तो तुम्हारे बजट का क्या होने वाला है? तो सेविंग्स का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट इज, फ्रेंड्स. डोंट मिक्स अप. इट इज अ सिंपल टर्म एज वी डिसाइडेड. जो अकाउंट में पैसा आ गया क्रेडिट आ गया, जो अकाउंट से चला गया वो डेबिट हो गया. यस, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन. बट अंडरस्टैंड the basic difference when you purchase on credit card, the basic difference when you purchase on EMI, the basic difference when you accept the loan for some purchasing. Are we doing the right thing? Whether it is enhancing our purchasing power or it is helping our to grow our savings, so no, it is not helping. Rather, ये उल्टा है. It is affecting our purchasing power. It is creating burden on ourselves, that too of high interest. That is what we have to understand from this credit and debit in financial investment part. Don't get carried away by the sales people or by the people who are selling all these products. है ना, आपको मिलता है ना, ऑनलाइन आप खरीदी करोगे तो ऑप्शन आता है, EMI ऑप्शन अवेलेबल, ये आता है. At that point you decide whether this is my necessity or my want. अगर वो want है तो उसे रोक दो. नेसेसिटी है तो कोई सवाल ही नहीं है, वो करना पड़ेगा. Then it means that you have to reflect on yourself and see, go back to the basics, go back to your budgeting part. कहाँ गलत बजट हुआ था? Because at this point, when you are allowing yourself to burden yourself with interest, then you have to think twice. That is what I mean to say by understand the credit and debit in context of money market. कर्जे पे पैसा लेके उसको खर्च कर देना अपने बॉन्ड्स पे is not advisable, because wants they can wait for time. Needs they are to be completed at the very necessary part of that hour. So friends, don't convert your wants into needs. Understand what is credit and debit. If you are purchasing on credit card, then it means that you are allowing yourself to get burdened with the interest part. So पहले डिसाइड करो कि मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है कि नहीं लेना है, वेदर वो मेरा नीड है कि वांट है. अगर वांट है तो रोक दो. मैं तो कहूंगा कि आप थोड़ी देर रोक दीजिए, बिकॉज अभी तक तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी आपको. तो व्हाई नॉट बजट इट आउट, वेट फॉर सम टाइम, प्लान इट आउट एंड देन परचेज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बर्डन ऑन आवर सेविंग्स, ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स. क्यों करें? दैट इज व्हाट यू हैव टू आंसर फॉर. क्यों? क्योंकि जिंदगी का सफर आसान नहीं होता. हर कदम पर एक नया इम्तिहान है होता. हार न मानो, चलते रहो हर मुश्किल राह पर. हार न मानो, चलते रहो हर मुश्किल राह पर, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा मेहरबान है होता. Provided you understand the difference between credit and debit, and that is affecting in the money market, is your savings account, your investments. So we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi, friends. Till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.